Yes, so continuing with our chapter that is discovering truth, the saga continues. Today we are going to start from the part from where जहाँ से truth की CT scan start होती है. Okay, and this CT scan was done to ascertain the reason of his death. Whose death? Of the death of this boy Peroha, that is of this King Tutankhamun, that is King Tut, who died as a boy king, who died very young, and he was the youngest king of the Egypt, youngest ruler of the Egypt. To ascertain the reasons behind his death, CT scan was performed on his mummy, that is his corpse. Now see, today diagnostic imaging can be done. We have to start it from here. You can see I'll highlight it and show it to you कि हम लोग आज कहाँ से begin करेंगे अपना chapter from this point. Okay, from the third last paragraph that today diagnostic imaging can be done with computed tomography or CT by which hundreds of X-rays in cross sections are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. What more would a CT scan reveal of truth than the X-ray? And could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die and how old was he at the time of his death? Now see, today this diagnostic imaging has to be done with computed tomography, that is CT, by which hundreds of X-ray in cross section are put together like slices of bread just to create a three-dimensional virtual body. Okay, three-dimensional virtual body create करना था उनको. And what more would a CT reveal of the truth than the X-ray? अब CT से X-ray से ज़्यादा अब ये CT क्या reveal करती है? See, and it could it answer two of the biggest questions still lingering about it? उनके बारे में दो बहुत biggest questions हैं जो आज भी इसी तरह से linger around कर रहे हैं. And what are those two questions? हाउ डिड ही डाई कि उनकी डेथ कैसे हुई एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ और जब उनकी डेथ हुई उस समय वो उनकी एज क्या थी. सो व्हाट आर द टू क्वेश्चंस बेसिकली जिनके आंसर्स चाहिए. टू बिग क्वेश्चन इज एक तो जब उनकी डेथ हुई तो उनकी एज क्या थी, हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, एंड द सेकंड इज हाउ डिड ही डाई, उनकी डेथ कैसे हुई. ओके, सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो नाउ जितना भी चैप्टर हम पढ़ेंगे जस्ट पे अटेंशन कि हमें इन दो क्वेश्चंस के आंसर्स मिले. King Tut's demise was a big event. Even by royal standards, he was the last of his family line, and his funeral was the death rattle of a dynasty. But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. Now, what happened is King Tut का जो demise था, उनकी जो death थी, it was a very big event. ठीक है? ये क्या था, एक बहुत बिग इवेंट था इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स आल्सो बिकॉज वो अपनी फैमिली लाइन के लास्ट पर्सन थे एंड हिज फ्यूनरल वाज द डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी. जो उनका फ्यूनरल था ना, इट वाज अ काइंड ऑफ डेथ रेटल ऑफ द डायनेस्टी, बट जो पर्टिकुलर्स थे ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ वो बिल्कुल अनक्लियर है कि उनकी डेथ कैसे हुई एंड उसके बाद क्या हुआ. द थिंग्स आर टोटली अनक्लियर. Amenhotep III, Tut's father or grandfather. Amenhotep III जो थे either he was Tut's father or Tut's grandfather. He was a powerful Peroha who ruled for almost 4 decades. वो एक बहुत ही powerful Peroha थे जिन्होंने almost 4 decades के लिए rule किया था at the height of the 18 dynasty golden age. किस पे? Height of 18 dynasties gold age, and his son एमेनोथेप फोर सक्सीडेड हिम. और उनके बाद में जो एमेनोथेप फोर आए उन्होंने उसको सक्सीड किया एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट. एंड ही इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट. जो न्यू पेरोहा थे, ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटेन द सन डिस्क, चेंज हिज नेम टू एथिन. ये क्या है? एकिन, एकिनथेन और सर्वेंट ऑफ एटेन, and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akheten, now known as Amari. He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temple. It must have been a horrific time, said Roy Johnson, director of University of Chicago Research Center in Luxor. The saint of ancient Thebes, family that had ruled for centuries, was coming to an end, and Akhenaten went a little wacky. Now see, जो न्यू पेरोहा जो आए, he promoted the worship of Aten. जो सन गॉड थे ना, उनकी वर्शिप को इन्होंने क्या किया?
प्रमोट किया और उन्होंने चेंज कर लिया अपना नाम एखेन टेन, जिनको कहा जाता है द सर्वेंट ऑफ एटन। हु वाज एटन? एटन वाज द गॉड ऑफ संडे। ठीक है, एंड इन्होंने पूरा अपना रिलीजियस कैपिटल जो था ना वो मूव कर दिया ओल्ड सिटी ऑफ थेबिस से टू द न्यू सिटी, जो उनकी सिटी थी जिसका नाम था एक्हितेन, और जिसको अभी अमाना के नाम से जाना जाता है। उन्होंने फर्दर शॉक कर दिया कंट्री को जब उन्होंने अटैक किया अमून को, और जो वहां के मेजर जो उनके गॉड थे ना उनकी सारी इमेजेस को स्मैश कर दिया, उनके सारे टेम्पल्स को क्लोज कर दिया। एंड इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, ये बहुत ही हॉरिफिक टाइम रहा। ऐसा हमें रे जॉनसन बताते हैं, जो शिकागो रिसर्च यूनिवर्सिटी एट लक्जर के क्या है, डायरेक्टर। उन्होंने बोला जो साइंस थी एंशिएंट थीबीज की, वहां पे उन्होंने बोला जो फैमिली थी उसने रूल किया फॉर सेंचुरीज, वो एंड पे आ रही थी। एंड देन एकेनटेन जो थे वो थोड़े से वैकी हो गए, एंड आफ्टर हिज डेथ एक मिस्टीरियस रूलर आए नेम्ड सेमिन करे, appeared briefly, ये आए बहुत ही briefly and excited with hardly a trace, and he excited with hardly any trace of his Tut as he widely known today, Tut जिन्हें अभी जाना जाता है, the boy king soon changed his name to Tutankhamun। इन्होंने अपना नाम जो था तुतुनखामुन चेंज कर लिया। एंड लिविंग इमेज ऑफ अमून, जो लिविंग इमेज थी किसकी, अमून की, तुतुनखामुन देख रहे हो ना, अमून। एंड ओवर सॉ अ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और इन्होंने जो ओल्ड वेज थे ना उन सबको रिस्टोर कर दिया। ही रिजाइंड फॉर अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली। उन्होंने 9 years के लिए यहाँ पे अपना रूल किया एंड अनएक्सपेक्टेड से उनकी डेथ हो गई। And regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. How many? No one knows. The Egyptian Mummy Project, which began an inventory in the late 2003, has recorded almost six or so far and is still counting. Next phase, scanning the mummies with the portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens. Its manufacturer, King Tut, is one of the first mummies to be scanned in death as in life, moving regally ahead of his countrymen. Now he says that regardless of the fame and speculations about his fate, Tut जो था ना, Tut की जो मम्मी थी, मम्मी इन द सेंस वो जो उनका डेड बॉडी था, प्रिजर्व्ड डेड बॉडी, is one among many in Egypt. Egypt basically इसी के लिए famous है, and how many no one knows. Egyptian mummy project जो था ना, it began an inventory in the late 2003 and इन्होंने record किया almost till now 600 so far and it is still counting. The next phase जो था scanning of the mummies with a portable CT machine जो डोनेट किया गया था बाय द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड साइमंस, उसके जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने, इसमें किंग टुट की जो मम्मी थी ना, इट वाज द फर्स्ट टू बी स्कैन in death as in life, moving regally ahead of his countrymen. A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1,700 digital X-ray images in a cross section, and Tut's head scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structures takes on arid detail in the resulting image, with Tut's entire body similarly recorded. A team of specialists in radiology, forensic, and anatomy begin to probe the secrets that the winged goddesses of the gilded burial shrine protected so long. Now he says एक CT scan machine जो है ना वो मम्मी को स्कैन किया उन्होंने हेड से लेके टो तक, एंड क्रिएट किया उन्होंने 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन अ क्रॉस सेक्शन। टूट का हेड जो स्कैन हुआ ना वो जिस स्लाइस में हुआ, व्हाट वाज द साइज ऑफ दैट स्लाइस, 0.62 मिलीमीटर का स्लाइस था, एंड उसका पूरा का पूरा टू रजिस्टर इट्स इंटीग्रेट स्ट्रक्चर, एंड उसने एरी डिटेल मतलब माइनर टू माइनर डिटेल लिया उन्होंने इन द रिजल्टिंग इमेज, एंड विद दिस टूट का पूरा जो इंटायर बॉडी था इट वाज आल्सो सिमिलरली रिकॉर्डेड। एंड टीम था स्पेशलिस्ट का इन रेडियोलॉजी, फोरेंसिक एंड एनाटॉमी, इन्होंने बिगैन किया टू प्रॉब द सीक्रेट्स that the winged goddesses of the gilded burial shrine ने protect किया था for so long. The night of the scan, workmen carried Tut from the tomb in his box. Like pallbearers, they climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside, and then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. 20 minutes later, two men emerged, sprinter for an
office nearby and returned with a pair of white plastic fans. The $1 million scanner had quite because of the sand in a cooler fan. Curse of the Peroha, joked a guard nervously. Now see, when it was put into the CT scan machine and when the slices were being taken out, it is said that on this night of the scan, जिस रात को ये CT scan हो रहा था ना, जो वर्कमैन थे उन्होंने टुट को कैरी किया फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स, और एक पॉल बेयरर्स जो होते हैं ना उनकी तरह ही क्लाइम्ड ओवर द रैम्प एंड फ्लाइट था ऑफ द स्टेयर्स इनटू द swirling sand आउटसाइड. वहां पे उन्होंने एक हाइड्रोलिक लिफ्ट लिया, उस ट्रेलर के ऊपर उन्होंने इस मम्मी को रखा एंड दे हेल्ड द स्कैनर. And 20 minutes later, two men emerged over there and sprinted for an office nearby और वो return हुए with a pair of white plastic fans and $1 million scanners जो थे ना they had quite because of the sand in the cooler fan. And curse of the Peroha, जोक किया एक गार्ड ने बहुत ही नर्वसली, जो मतलब गार्ड ने मजाक उड़ाते हुए बोला कर्स ऑफ द पेरोहा, कि ये इसी पेरोहा जिसको डिस्टर्ब किया है ना ये उसी का कर्स है. Eventually, the substitute fans worked well enough to finish the procedure, and after checking that no data has been lost, the technicians turned Tut over to the workman who carried him back to his stop. Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the Peroha again rested in peace, where the funerary priest had laid him so long. Eventually, जो substitute fans होते हैं ना वो work करते हैं well enough to finish the procedure, and after checking that no data has been lost, कोई डेटा लॉस नहीं हुआ है, टेक्नीशियंस जो थे दे टर्न्ड टुट ओवर टू दी वर्कमैन. वो वर्कमैन जो कैरी करके लेके गए उसे बैक टू हिज टॉम एंड लेस देन 3 hours लेफ्ट हुए थे आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज कॉफिन. जब उन्हें कॉफिन में से निकाला गया था, पेरोहाज ने अगेन उसे रेस्ट कर दिया इन पीस. जहां पे उसके फ्यूनररी प्रीस्ट ने उसको बहुत पहले लेटाया था ना, उन्होंने वहीं पे वापस उसको ले डाउन कर दिया. बैक इन अ ट्रेलर, जब वो ट्रेलर में वापस आ रहे थे, टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टुट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. तो वो जो टेक्नीशियन थे उन्होंने टुट की बहुत ही एस्टोनिशिंग सी इमेजेस थी वो उन्होंने उस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर वापस से प्ले की. अ ग्रे हेड took shape from a scattering of pixels. एक ग्रे सा हेड था जो छोटे छोटे पिक्सल्स थे जो स्कैटर्ड थे हर तरफ, उससे वो पूरा एक इमेज जो था वो उस पे बना. ठीक है. नाउ एंड टेक्नीशियंस spun and titled it in every direction, tilted it in every direction. Neck vertebrate appear as clearly as in an anatomy class. Another image revealed a hand, several images of the rib cage and transection of the skull. नाउ सी, आपने देखा होगा, आप कभी एक्सरे देखते हो तो उसको रोशनी में हम पूरा से टेढ़ा मेढ़ा घुमा घुमा के देखते हैं तो हमें पता चलता है ना. सिमिलर उस वे में उन्होंने बोला कि ग्रे सा एक हेड था, फिर उन्होंने जब उसको थोड़ा सा पूरा टेढ़ा मेढ़ा किया तो दे कुड सी दी नेक वर्टिब्रेट, फिर उन्हें हैंड दिखाई दिया, रिब केज दिखाई दिया और थोड़ा सा ट्रांसेक्शन दिखाई दिया स्कल का. बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ. बट अभी जो प्रेशर था इट वाज ऑफ. सिटिंग बैक इन हिज चेयर, अपनी चेयर में वापस बैठे जही आवाज स्माइल, जही आवाज ने स्माइल किया. विजिबली रिलीव्ड, वो थोड़े रिलीव्ड थे. दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कि सीरियसली बहुत ज्यादा कुछ गलत नहीं हुआ है. नथिंग हैज गॉन रॉन्ग. आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड, ही सेड, कि मैं लास्ट नाइट सोया नहीं हूँ. एंड नॉट फॉर अ सेकेंड ही सेड, आई वाज सो वरीड, मैं इतना डरा हुआ था. बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, बट नाउ आई थिंक मैं जाऊंगा और सो जाऊंगा. आई एम गोइंग टू sleep. By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. And by the time जब हमने उस ट्रेलर को छोड़ा वहां पे, डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स, वहां पे मेटल स्टेयर्स ऑब्वियसली जहाँ सीटी स्कैन मशीन बना था जिस ट्रेलर में, तो वो ट्रेलर से जब वो नीचे उतर रहे थे तो दे वर डिसेंडिंग द मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड. ऑब्वियसली नीचे क्या था, ग्राउंड, एंड इट वाज सैंडी. द विंड हैड स्टॉप्ड, हवा जो थी वो रुक गई. विंड विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल, विंटर एयर सर्दी की जो हवा होती है इट वाज स्टिल एंड कोल्ड लाइक डेथ इटसेल्फ, बिल्कुल खुद जैसे डेथ की, डेथ जैसे ही पूरी एक वो जो है फीलिंग आती है. इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड मीन्स this was the area where all the departed souls have been laid in rest. Just above the entrance to Tut's tomb stood Orion, constellation that the ancient Egyptian knew as the soul of Orisis, the god of afterlife, watching over the boy king. और right just above the entrance of the Tut's tomb Orion था. Orion एक ऐसा constellation है of stars
जिसे एंशियंट इजिप्शियंस मानते हैं इट इज द सोल ऑफ ओसिरिस। एंड ओसिरिस कौन थे? द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। वंस यू लीव दिस अर्थ, दिस ह्यूमन अर्थ, तो उसके बाद में आफ्टर लाइफ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए जो गॉड होते हैं वो होते हैं। एंड ही वॉज वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, और वो इस बॉय किंग को वॉच ओवर कर रहे थे। ओके, सो दिस इज ओके, फाइन, गुड, हो गया ये कंप्लीट यहीं पे। एंड इट वाज टेकन फ्रॉम दी सोर्सेज, दैट इज नेशनल ज्योग्राफिक वॉल्यूम 207 नंबर 6। इट वाज टेकन फ्रॉम दिस पार्ट। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सेक्शन था। अगर जिसने समझा है, दोज हु हैव जनरेटेड द इंटरेस्ट, उनका तो इंटरेस्ट जनरेट हो गया। एंड दोज हु हैवंट, वी जस्ट कांट हेल्प इट, नहीं आया इंटरेस्ट तो अब नहीं आया, वी व्हाट कैन वी डू, है ना। बट दोज हु आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स, फॉर देम दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, उनके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट रहा होगा। ओके, so understanding the text, give the reasons of the following. So the reason for the first statement, that is the King Tut's body has been subjected to repeated scrutiny. And it is that yes, it's right from the time of the discovery of his tomb in 1922 by Howard Carter. Modern world has always been curious to find out what had happened to the King Tut, because he died unexpectedly and no one knows how the boy king lived and how he died, and at the time of his death what was his age. So this was a big mystery, and this murder being the most extreme possibility. तो ये murder एक possibility था. Just to invent the details about all this, it was again and again scrutinized. Howard Carter's investigation was resented. It was resented because it destroyed the original state of the mummy, because his men cut off the mummy's head, severed every major joint of the body just to raise King Tut from the coffin. That is why, but later then it was reassembled, the remains on the layer of the sand in a wooden box, and put the body back from where it was. But earlier it was resented because of these reasons. Third is Carter had to chisel away the solidified resins to raise the king's remains. Why? Howard Carter had to chisel away the solidified remains because ये जो ritual resins थे ना, ये बहुत harden हो जाते थे, and it cemented the king Tut's body to the bottom of the solid gold coffin permanently. Okay, so next is King Tut's body was buried along with gilded treasures. Why? It was buried with the gilded treasure because in the time of the king was very wealthy, and people thought and hoped that they could take their riches with them in their journey after death. ऐसा मानते थे कि वो डेथ के बाद भी अपनी जर्नी पे इनको अपने साथ ले जाते हैं. Hence जो किंग टूट थे ना, he buried all the things जो उन्हें डेली लाइफ के लिए चाहिए थी, so that whenever he would need them in his after life, तो उनके पास वो चीजें होनी चाहिए. Fifth is the boy king changed his name from Tutankhaten to Tutankhamun. Tutankhaten से उन्होंने अपना नेम तुतनखामुन किया. Why? Because जो Amenhotep 4 आए थे ना, उन्होंने क्या किया था? He attacked the major god Amun, and ये बहुत ही अनरेस्ट का टाइम था. Now when he came to the rule, जब तुतनखामुन का रूल आया, तो बिकॉज अमून जो थे वो उनकी एकदम लाइव इमेज था. तुतनखामुन का मतलब होता है द लिविंग इमेज ऑफ अमून, एंड दैट इज व्हाई ही चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम तुतनखातेन टू तुतनखामुन. एंड ही चेंज ऑल द अर्लियर ऑर्डिनरी वेज को उन्होंने सबको चेंज कर दिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज लिस्ट द डीड्स दैट लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब एखेनातेन एज वैकी. उन्होंने इनको वैकी क्यों बोला? बिकॉज ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटेन, जो सन गॉडेस थे, इन हिज ओन नेम्ड, और उन्होंने जितने भी जो अमून जो गॉड थे उनके जो इमेजेस थे उनको स्मैश कर दिया, उनके टेम्पल्स को क्लोज कर दिया. एंड हिज रिजाइन वाज अ वेरी हॉरिबल टाइम. दैट इज व्हाई उनको कैसा डिस्क्राइब किया गया? एज वैकी. एंड व्हाट वाज द रिजल्ट्स ऑफ द सीटी स्कैन? सीटी स्कैन मशीन का रिजल्ट ये था दैट इट स्कैन्ड द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो. इट क्रिएटेड 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन. किंग टूट के हेड को स्कैन किया उन्होंने 0.62 mm का स्लाइस के अंदर, एंड रजिस्टर द कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर just to probe the secrets of his death. And during the scan there were several hurdles in the scan, but it went as expected. जैसा माना गया था वैसा ही हुआ. अदर इमेजेस ने एक हैंड रिवील किया,
नेक वर्टिब्रे दिखा, रिब गेज दिखा एंड एक स्कल का ट्रांसेक्शन भी दिखा, ठीक है. इट शोड दैट नथिंग शोड, इसमें ये पता चला दैट वाज नथिंग अननेचुरल इन हिज डेथ, कि उनकी डेथ में अननेचुरल जैसा कुछ भी नहीं था. लिस्ट द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी दैट हैव इम्प्रूव फॉरेंसिक एनालिसिस. अब एडवांसेस क्या हुए उन्होंने जिससे कि फॉरेंसिक एनालिसिस सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुआ. अब कंप्यूटेड टोमोग्राफी होने लगा, दैट इज सीटी. इन सीटी 100 ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन जो है वो पुट टुगेदर किए जाते हैं लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड्स, और उससे 3 डायमेंशनल वर्चुअल पिक्चर क्रिएट होता है ऑफ द बॉडी. एंड जो स्कैनर्स होते हैं ना, दे कैन इवन स्कैन अ वेरी इंटीग्रेट स्ट्रक्चर बाय स्कैनिंग इट इन थिन स्लाइसेस. बहुत थिन थिन स्लाइसेस में बिल्कुल इंटीग्रेट स्ट्रक्चर्स भी वो लेकर के आ सकते हैं. नाउ लास्ट इज एक्सप्लेन द स्टेटमेंट किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन इन डेथ एज इन लाइफ. तो किंग टूट जो थे, उनका जो मम्मी था ना, इट वॉज द फर्स्ट टू बी स्कैन इन डेथ एज इन लाइफ. सो वो लास्ट रूलर थे, पता है हमें, ऑफ दिस फैमिली. एंड ही वॉज नॉट इवन अ टीन एज वेन ही डाइड. सो दैट इज वाई इट वॉज सेड कि ये जो था, इट वॉज द फर्स्ट मम्मी टू अंडरगो अ सिटी स्कैन. हेंस इन लाइफ हो चाहे डेथ हो, ही हैज बीन द अटेंशन ऑफ ऑल. तो जब वो अलाइव थे तब भी वो अटेंशन ऑफ ऑल थे, एंड जब अभी उनकी डेथ हो गई है दैट टाइम आल्सो ही इज द अटेंशन ऑफ ऑल. ओके, सो ये ऑल दीज क्वेश्चंस आर क्लियर. इफ यस तो एक बार क्विकली हैंड रेज कर दें आप लोग, इफ द क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू. यस, गुड गुड. सो अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर इन द क्लास इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है ये चैप्टर, नो डाउट्स, ठीक है. बिकॉज अदरवाइज आप इसको बहुत डिफिकल्ट फाइंड करोगे, बट यू हैव अंडरस्टूड इट नाइसली ओवर हियर, तो आपको ये चैप्टर बहुत हेल्प करेगा. सो सी, नाउ आई विल क्विकली रिवाइज few important things from this chapter within 5 minutes, and then it will be the time for class to get over. So Tutankhamun, or the King Tut, he died as a teenage Pharaoh and he was buried laden with gold, and he was the last king of the powerful family that ruled Egypt for centuries. Okay. So it was 5th January 2005 कि उनका जो मम्मी था ना, it was brought out of his tomb and the CT scan was done. And why was the CT scan done? Just to ascertain the reasons of his death. Knowing this thing, multitude of tourists came all around the world just to visit to the tomb and to pay their respect. Now Zahi Hawass, जो एक सेक्रेटरी जनरल थे of the Egypt Supreme Council of Antiquities, said कि this mummy is in a very bad condition and because of what the Carter do to it. Now what happened? Carter ने क्या किया था? जस्ट टू चिजल इट अवे ना, उसको उस कॉफिन में से निकालने के लिए ही हैज टू सेक्शन द बॉडी. उन्होंने उस बॉडी को पूरा सेक्शन वाइज उनको उसको कट किया. ठीक है, कैसे कट किया? हेड अलग कर दिया, ऑल द मेजर जॉइंट्स वर सेपरेटेड, मेजर जॉइंट्स सारे सेपरेट कर दिए, तो पूरा पार्ट अलग किया. लेटर ऑन इट वाज रीअसेंबल्ड, बट बिकॉज ऑफ ऑल दिस कटिंग एंड सेपरेटिंग, ये जो पूरी बॉडी थी ना, इट वाज इन अ वेरी बैड कंडीशन. नाउ ही सेज हावर्ड कार्टर एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इनके डिस्कवर किया इनके टॉम को इन 1922 एंड ही इन्वेस्टिगेटेड इट्स कंटेंट. कार्टर को बहुत डिफिकल्टीज उन्होंने फेस की जस्ट टू टेक इट आउट फ्रॉम द गोल्ड कॉफिन बिकॉज ऑफ द रिचुअल रेजिन्स. ये जो बॉडी था ना, इट रिजल्टेड इन सीमेंटिंग द बॉडी टू द बॉटम ऑफ द गोल्ड कॉफिन. उनका जो कॉफिन था वो अपने आप में एक मास्टरपीस था. ठीक है, इट वाज ऑफ गोल्ड एंड इट वाज अ मास्टरपीस ऑफ ऑल. हावर्ड कार्टर ने इन रेजन्स को लूज करने की कोशिश की, बट इट वाज इम्पॉसिबल. सो ही थॉट कि सन जो है ना, वो तो किसी कुछ भी चीज को कैसे भी हीट अप कर देता है. दैट इज वाई उन्होंने इसको जो था इन सन उन्होंने इसको रखा एंड 170 समथिंग की उस पे डिग्री फ़ारेनहाइट पे उन्होंने इसको हीट किया, बट स्टिल ऑल्सो डज नॉट नथिंग हैपेंस. तो कुछ भी नहीं हुआ. ठीक है. Now what they did, उससे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, but what they have to do then, finally they have to cut off nearly every major joint before reassembling it. In 1968 एक anatomy professor थे, he x-rayed the mummy and revealed a startling fact. He claimed कि जो breast bone थी and front ribs थे ना, इस corpse के, इस mummy के, they were missing. Then comes the time of the Amenhotep III, जो King Tut के father थे और grandfather थे. He was a very powerful king. But later he was succeeded by Amenhotep IV and he was a very wacky kind of a person. इन्होंने promote किया the worship of king
god Aten, who was the sun disk, and changed the name of Akhenaten. He made some other changes also, like he just smashed away all the images of the god Amun, closed all the temples of that god. So inhone, he was a kind of a wacky person. He did some very major and very cruel changes. So King Tut's mummy was one of the first mummy to be scanned, and CT scan ne show kiya gray head, then a neck vertebrate was shown in an image, then in several other image hand was shown, several images of rib cage was shown, and a section of skull was also presented over there. Zai Hawass ने relieve किया to find that nothing had gone seriously wrong with the mummy, that nothing had gone seriously wrong with this mummy. And after their observations, when they left, the wind had stopped and there was complete silence again. And just above the entrance of the king Tut's tomb, एक Orion था. Orion basically क्या है, एक ऐसा constellation है which is said कि वो refer करते हैं to the god Orisis, and Orisis god थे god of afterlife. So it is said कि ये जो constellation है ना, it is of the god of afterlife. So he was protecting this, watching over this boy king. And who was this boy king? King Tut, Tutankhamun. ओके, सो आई होप दिस इज वेरी वेल एक्सप्लेन टू यू. अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, करेक्ट? So this is all for the class today. We have finished with understanding the text, question answers, and understanding the text, that is the chapter itself. And tomorrow's class will be coming up with something new. Till then, you just take care of yourself and stay home and stay